मैं सच बताऊं, अभी आपसे मुलाकात हुई, ट्रेलर पहले भी देखा था, मेरे साथ वालों ने भी देखा था, मुझे लग नहीं रहा था एकदम ऐसा शालीन इंसान ने ये बना दिया सर। खुद कितना इसमें मेहनत की। नैनीताल मेरा भी होता। ओए तू तो सर बात ही खत्म हो गई। तल्लीताल या मल्लीताल? मल्लीताल सर। अब मुझे बताइएगा आप ये कौन कौन से एरियाज में कुछ ऐसा होता है सर, मैं ढूंढ के थक गया। ये नकुचिया ताल, भीमताल, नैनीताल, चाइना पीक, तल्लीताल, मल्लीताल, सब जगह, ठंडी सड़क, मॉल रोड। राइट, ऑल द कपल्स यू नो दे गो टू दीस प्लेसेस। जैसे हमारे यहाँ रेक्लेमेशन है और बैंड स्टैंड हम लोग जाते हैं, ऐसे यहाँ पे जो बोल्ड सब्जेक्ट है इसके बारे में सब कोई बात करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे बट मजा सबको आ रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से? इतना बोल्ड सब्जेक्ट सर। This is a story about desires. Wow. And When you say desires. and what See, that they word what he they said, do to you desires. in your life, you know. So bold, not bold. The story is not about boldness. The story is about desires. तो अपना पर्सनल लाइफ से कितना इसमें मसाला डाला है? मैंने हाँ इसमें तो भूत हैं, इसमें तो बहुत सारी सर भूत ऊत छोड़ो, आप दूसरी बात करो। भूत ऊत भी करते रहेंगे। हाँ पर्सनल लाइफ से it's basically based on a story which was narrated to me by a friend of a friend. Okay. You know? Okay. So that got me excited and I started thinking about it. Right. When you talk about भूत, you know, इस genre को जिस हिसाब से एक इंसान है जिन्होंने जितना you know, उसके अंदर गहराई से देखा है, किसी और ने नहीं देखा, and we have that gentleman with us over here. So give it up for Mr. Vikram Bhatt, ladies and gentlemen, the uncrowned king, I would say, as a haunted horror films जो ये genre है. Sir, हाँ? Crowned सर, मैं यहाँ पे अभी क्या बोलूँ? आपने ट्रेलर देखा सर? नहीं देखा अभी तक? So we'll do one thing, we'll play the trailer once again. लेकिन when someone, you know, जैसे ईशान है, ये ट्राई करते हैं कुछ ऐसा बोल्ड सब्जेक्ट, थोड़ा एक स्कैंडलस सब्जेक्ट, तो लगता है यार नया आदमी है, पता नहीं उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा, कुछ करेगा नहीं करेगा। नया आदमी ही कर पाएगा, क्योंकि हम तो अभी स्कैंडल से ब्लंट हो गए। कुछ स्कैंडल लगता ही नहीं हमको, सब ठीक ही लगता है। तो स्कैंडल देखने के लिए भी आंखें चाहिए, हाँ। जो नए आदमी में होती है। जी। तो ज़रूर आई एम वेटिंग टू सी व्हाट इट्स ऑल अबाउट। राइट, टॉकिंग अबाउट योर कनेक्शन विद द भूतियापंथी, ये कैसे सर, ये कहाँ से, मतलब वो एकदम इंट्रिग किया, क्या हुआ? सेफ है ना भूत लोग, कैसे? उनका एक कैरेक्टर है कि ये डराएंगे। एक्चुअली डर तो इंसानों से लगता है, वो कैसे भी हो सकता है। भूत सेफ होते हैं। सेफ है, सिर्फ विक्रम जी बोल सकते थे ये बात यार, भूत सेफ होते। कितनों को भूत सेफ लगते हैं यहाँ? जो भी मन में कह रहे हैं ना, अभी रात को आएगा देखना, आज भूत ही आएगा, ये और कुछ नहीं कह रहे हैं उनके पास आएगा। हाँ, उनके पास जरूर आएगा। ईशान, विक्रम जी इज हियर, एकता इज अबाउट टू जॉइन अस, यू नो, सब लोग इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से? I'm happy. एंड फॉर यू रीत? Super happy. Thank you so much. बवेजा साहब, मतलब पहला ट्रेलर और आग लगा रखी है। ये वो जो डिजायर्स बोला था तो वो सब दिख रही है, so we all are happy I guess. राइट। मुझे बोले incest is something that a lot of people do not talk about openly, तो कभी नहीं, you know, इसमें incest का भी कुछ हिस्सा है कुछ। Let's leave it for the film. अच्छा, है ना? Yeah. हाँ, okay. So that is something a lot of people do not, you know, come out and talk about. और वो यहाँ पे हमने देखा कुछ ऐसे बिखरा है। So yeah, you. I should say about it. I mean, incest is there in our society. Just that we just keep it as a secret. I think every girl somewhere or the other go through things that we don't talk about. We hide it from our parents because we are kids. Practically, it is there. So yeah, in our film we have shown it in a different light as a story, but yeah, I do approve of the fact that incest exists. So we talk about many issues, you know, we make a lot of films on many social issues. Yeah. This is also a thing which is very concerning, and it's we are not glorifying the act in the film. You know, we are talking about it. It's an issue which should come out. Right. People should know, and definitely it should be stopped at a very early level, because we all know what it is. Right. It definitely has an intriguing story, because I don't know the story of the film, so I want to know more. I can see that there's a girl who is dead, and there's some spook element, then there is some
triangle going on, and I can see that Reet is not letting people sleep, or people are not letting Reet sleep. So there's an insomnia angle also. So there is a lot of things going on, but it definitely creates an intrigue factor. It's also shot nicely. It's, there is the location is adding to the character of the film, which is always a good thing, because people come to see, in my opinion, they come to see something in entirety. You just don't want to see a plot. You want to see plot and a good story and well shot. So I think it looks like a complete package to me. I think we should express the social fabric of our country, and there is good, there's bad. I think sometimes we can confuse in this country sex with sexual crime. You know, anything consensual after the age of 18 should not be anybody else's problem. And so I think the problem of, in order to be emancipated, you have to accept different lives and different lifestyles. And I wish Reet and Johnny and Ishan sir the best for their endeavor. I'm sure they've made a fantastic film. Typecast हो जाता Actually, I believe that, you know, I actually decided to come to the press conference when Reet called me, because I actually believe that, you know, by next year I hope to launch some newcomers. I think our industry needs fresher, newer actors, and it doesn't matter what genre they get launched in. I hope both Johnny and Reet, I've known for many years, I haven't had a chance to work with them, do very well in life. And even though I'm going through a lot in the last couple of days, I couldn't cancel on them, because I feel at a certain age, however young or old, I want to specify, you have to start encouraging fresh talent or supporting. I haven't yet been able to encourage that much. I hope to support them. Thank you.